Hello friend, welcome back to my lecture on database connectivity in C#.NET. So I am continuing the same lecture as I have told you and explained you in the previous class. So this is the database connectivity where we are connecting our C# with the Oracle or SQL or MS Access. So in the last class we have discussed about this program. So you can see again this program we have SQL connection class. The first class is SQL connection. By this statement we are connecting with server. So we have given here SQL connection C1 equals to new SQL connection, and we have mentioned here server name, username, password, and database name also. And by the second statement we are opening the connection, and the third statement is SQL command. So for creating a table or inserting data on it, basically we require these four set of function, and fourth one is the cmd1 dot execute non query. So cmd1 is the object of SQL command. So here we have mentioned the query new SQL command, create table name and the field inside the table with their data type, and comma second argument is connection, so which we have mentioned over here. So this is the connection, means by which server and which database we are connecting. So it is in this connection statement. So cmd1 dot execute non query will execute this statement, this create statement. And we have been one more statement. These four set of statement is sufficient to create a table. And suppose we have to insert the table, insert the data on table, then we will write this statement SQL command cmd2 equals to new SQL command insert into table name values. We have mentioned these three value comma connection. And again we have written here cmd2 dot execute non query and console dot write line row is inserted. So this is this message, table inserted, table is created, and this is row is inserted. And we have finally we have closed the connection. We have opened the connection here and we have closed the connection here. So this is one set of the statement. And on the other hand we require data reader and data adapter for select query. So for create and insert query, for running the create and insert query we require execute non query. We require the statement execute non query, but in case of select query we require data reader and data adapter class. So this is used for sequential access to the data source. Read forward only, reads a forward only, read only stream of the data from data source, while data adapter populate dataset and update the database. So the difference between data reader reads row by row, one by one row, एक रो रीड करता है, फिर रीड ओनली और फॉरवर्ड ओनली स्टाइल में चलता है, and it reads one row at a time. So one by one it reads the row, but it moves only for a direction, while data adapter it reads complete data at a time. So it populate the dataset. We use dataset in this case. So you can see the program here, and before the program we have been this diagram also. So when we read the data, first of all we require connection, then we'll write the command SQL command, जो भी कमांड है, जैसे हम सेलेक्ट क्वेरी कर रहे हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट कमांड आ जाएगी. And then we read the data, and the data reader will read row by row. So here given rows means one row at a time, one by one row it will read. And on the other hand data adapter will read the complete table. So it is called data set, and by using while loop we will display each row. So this is the diagram of this data reader. And now see the program where we are using data reader and data adapter. So in this program the first line, which is
using system.data.sql client. So we are using here SQL client. Basically we have been four method, SQL client, OLEDB, common, and SQL type. So in this program we are using system.data.sql client, and the second statement is using system.data, and the namespace is the data set example, and inside this, because we are doing Windows application, that's why we have written the class dataset demo. So public partial class, this is the name of class, this is the user defined name, and we are writing here full colon, means we are inheriting system.web.ui.page, and this is protected void page load. So in place of any button click, we are using page load. So when we will start and page will load, then this program will execute. And there are two argument, object.center, each event handling function, we have been two argument, event args, and here we will write this statement, SQL connection con equals to new SQL connection. You can see here we are writing here SQL connection con equals to new SQL connection, data source, that name of data source, database, name of database, and integrated security. So we'll mention also security. So here in this program you can see here, we will write it, you can replace this one, and this is statement also, this is complete statement. We are writing here SQL connection con equals to new SQL connection, this is the data source, means server name and database name, and integrated security we will mention here. Now we will write the inside this page load function, we'll write SQL data adapter. This is SQL data adapter. We can also delete this one and this one also, because there is no need of this bracket sign. So we have been this another statement where we are using SQL data adapter, SD is its object, equals to new SQL data adapter, and we are writing here select string from student and connection con. This connection string is written here. So we will pass two argument to SQL data adapter. SQL data adapter को हम दो argument pass करेंगे, like in the previous program we have this SQL command, and here in this program we are using SQL command, and we have this create query, and then second argument is con. So same way in this program, as in SQL adapter we have select query. So create and insert will be written inside SQL command, but select query will be written inside SQL data adapter. This is the major difference. फिर से देखिए आप कि यहाँ पे हमने this is create query and this is insert query. Both query are written inside SQL command. And here also two argument. First is create table command and second is con. Con is the second argument. And the class name is SQL command. But in this program we have class name SQL data adapter, and the first argument is select query and second argument is connection. तो ये सेम है, आर्गुमेंट तो दो ही होंगे और द सेकेंड आर्गुमेंट विल बी द कनेक्शन. सो दिस विल बी सेम बट द नेम ऑफ क्लास इज डिफरेंट. उसके इसमें हम वहाँ पे यूज कर रहे थे SQL कमांड, बट हियर वी आर यूजिंग SQL डेटा अडेप्टर. ये डिफरेंस आपको समझना है, बाकी प्रोग्राम वही रहेगा. द कनेक्शन स्ट्रिंग विल बी सेम एज इन द प्रीवियस प्रोग्राम. तो ये सेम हो सकती है, पहले वाला स्टेटमेंट सेम हो सकता है. SQL कनेक्शन, सर्वर नेम, यूजर आईडी, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, ये हम यहाँ भी लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट हियर in place of this connection configuration. And now we have been this dataset class, and we have object of dataset equals to new dataset. So we'll write SDE fill DS. This SDE SQL data adapter will fill the function
fill function is inside SQL data adapter. So we'll write here sde.fill function and it will be filled by the data set. So अब data set क्या, अभी तो initially data set is blank. तो अब क्या होगा, जैसे हम fill कमांड रन करेंगे तो ये जो select वाला डेटा है इट विल बी ट्रांसफर टू द डेटा सेट. जो डेटा सेट हमारा एज ए आर्गुमेंट आ रहा है इसको हम फिल कर लेंगे इसके थ्रू. नाउ विल राइट ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू डेटा सेट. तो अब हमारा क्या होगा कि हम यहाँ पे ग्रिड विल डिस्प्ले अ ग्रिड. ग्रिड आप समझते होंगे, ग्रिड इज जस्ट लाइक ए टेबल. तो जब हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो टेबुलर फॉर्म में आपका डेटा इसमें आ जाएगा क्लास के अंदर. सो ग्रिड व्यू, अगर ग्रिड लाना है, कॉम्बो बॉक्स लाना है, कॉम्बो बॉक्स 1. अगर चेक बॉक्स होता तो चेक बॉक्स 1 आ जाता है इसमें. तो ग्रिड लेके आना है, ग्रिड इज इन टेबुलर फॉर्म में, डेटा इज इन टेबुलर फॉर्म. तो ग्रिड व्यू 1 डॉट डेटा सोर्स इक्वल्स टू ds. so this ds which we have filled by this SQL data adapter and this ds will be transferred to the grid view. और ग्रिड व्यू के अंदर ये डेटा बाइंड हो जाएगा एंड इट विल बी डिस्प्लेड ऑन ग्रिड व्यू. सो यू कैन एग्जीक्यूट दिस प्रोग्राम एंड you will see the data which is taken from this student class. It is stored on this grid view and our window, our program will show the grid हमको शो करेगा. Now see one more program where we are also using this data reader. So we have been this part of program. So we will start by import system.data.star and again we are writing here import system.data.oldb. So we are writing here import statement. We can write import statement also in this programming. So we have written here string s connection. S connection is equals to string connect provider Microsoft Jet OLEDB 4.0 and plus data source sage.mdb. We have written here data source and then OLEDB connection. So we'll write the OLEDB. This is the string connection string we have defined. Now we'll write here OLEDB connection. Like in this program SQL connection, as we are writing SQL connection, we'll write here OLEDB connection and its object is DB connection, and DB connection equals to new OLEDB connection and inside the bracket S connection, and this S connection is this. We have mentioned here the provider, data source and database name will provide here. And now we will write here connection dot open, and this connection dot open will open the connection, and this message box will show this will open connection. This is for connection, OLEDB connection, and this line message box dot show it will show that connection is open or not. So we can verify that the connection this line is properly running or not. So message box dot show, so it will, this message box will display this box message box dot show, and db connection dot state. db connection dot state means the state of connection is open, so it will display the message open to string and it will convert it into string and it will display open message. So by these lines we can open the connection. So we have a simple string variable and this string variable has the value of the connection configuration, provider name, data source, and now OLEDB connection, DB connection equals to new OLEDB connection. So we'll pass this connection string to this in the argument of this OLEDB connection, and then we will write db connection dot open. तो हम इसको ओपन फंक्शन के थ्रू ओपन कर लेंगे. चेक करना है तो हम इसके थ्रू चेक कर सकते हैं. Now see the next slide. This is also very important slide. So we are writing here select query. So this is the part of the previous one. तो पहले वाले पार्ट में हमने केवल कनेक्शन के बारे में मेंशन किया, and now the second part of this program where we are writing OLEDB reader. So I have told you we have been two classes, data reader and data adapter. Data adapter will directly take all the data from this table and it transfer it to ds. ds is a data set. ds is a vector type and its structure is vector type. So whole table will be transferred to here. Whole table is transferred to here. It is vector like
तो ये इंटीजर या फ्लोट की तरह नहीं है, वेक्टर की तरह है, 2 डायमेंशनल वैल्यूज को स्टोर करता है, 2 डायमेंशनल टेबल की यहाँ एरे की वैल्यू को स्टोर करता है। तो यहाँ से जो ये वैल्यू आई वो टेबुलर फॉर्म में आई, 2 डायमेंशनल फॉर्म में आई, वो सारी वैल्यू एचडी फिल करेगा डीएस के अंदर, एंड डीएस इज द डेटा सोर्स ऑफ ग्रिड। सो इट विल we will assign ds to grid view, and grid view will data bind command will display the data, will display the grid. So by this slide we can connect our computer, we can write this connection string, and we'll open the connection. Now we'll write data reader. In the next slide you can see here it has data reader. So see the string SQL and fn and ln are two string variable, and customer is a class, its object is C. So because we are writing this program for the customer, so we have been this function, this statement SQL equals to, SQL is a string type variable, and we are writing here query SQL equals to select asterisk from customer table, order by last name ascending order and first name ascending order. So we are giving the whole table, and it is in the order of last name and first name. तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के असेंडिंग ऑर्डर पे ये डिस्प्ले करेगा। तो ये हमने क्वेरी यहाँ पे लिखी हुई है, और पूरी कस्टमर टेबल से उठा लेगा सारा डेटा, एंड दिस कस्टमर इज ए क्लास, ये क्लास हमको बनानी पड़ेगी। आई हैव नॉट मेंशन दिस क्लास हियर, सो वी हैव टू बी राइट दिस क्लास ऑल्सो, ये क्लास होनी चाहिए अकॉर्डिंगली जैसे हमारी टेबल बनी हुई है इसकी फील्ड का। Now we are writing here OLEDB command and its object, and OLEDB data reader its object. So OLEDB command, for the object of OLEDB command dbcmd equals to new OLEDB command, and the argument of this is SQL comma db connection. SQL is this, see the query and then db connection. So this command will be written जैसे ये पहले लिखी गई है वैसे ही यहाँ पे भी लिखी जाएगी। ये OLEDB command, यहाँ भी SQL कमांड, यहाँ SQL कमांड लिखा है, वहाँ OLEDB कमांड है, तो क्रिएट टेबल उसके बाद कॉमा कनेक्शन, ऐसे ही SQL कमांड इंसर्ट क्वेरी देन कनेक्शन, और वहाँ पे OLEDB कमांड है तो पहले क्वेरी सेलेक्ट क्वेरी और उसके बाद कनेक्शन। So you can see here in this page we have this SQL means this select query and DB connection. DB connection means DB connection is represented here. This is DB connection. DB connection dot open. The connection we have, ये यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग हमने दी है, तो ये कनेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा DB कनेक्शन। एंड नाउ वी विल राइट हियर एग्जीक्यूट रीडर, dbcmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। सो जब ये कमांड OLEDB कमांड को हमें रन कराना है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्वेरी मेंशन कर दी है और कनेक्शन मेंशन कर दिया है, अब इसको एग्जीक्यूट करना है। सो नाउ विल राइट हियर dbcmd दिस dbcmd डॉट एग्जीक्यूट रीडर। सो इट विल एग्जीक्यूट द दिस कमांड ओवर दिस कनेक्शन, इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन पे अप्लाई होगी, मतलब ये कमांड रन होगी तो ये जो कस्टमर टेबल है वो इस कनेक्शन पे मिलेगी, और ये कनेक्शन ये है जिस कनेक्शन में हम जिसमें प्रोवाइडर ये है OLEDB 4.0 और डाटा सोर्स ये है, यानी कि इस सर्वर से हम कनेक्ट हो रहे हैं। तो now the whole data, all the data is transferred to this DB reader के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। So I have already told you when we will use data reader, then it will display the data रो बाई रो, 1 by 1 रो, एक रो एक बार में, फिर दूसरी रो, फिर तीसरी रो, इस तरह से। तो हम यहाँ पे भी हम इसमें ही कर रहे हैं कि 1 by 1 we are displaying the row, retrieving record 1 by 1. We have mentioned here in this command line, and we are using here while loop dbReader.read. At a time it will read the reader class. dbReader class means this OLEDB data reader class. DB reader is the object of OLEDB data reader. So the data reader, and it may be SQL data reader, SQL client data reader, common data reader, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 ऑप्शन हमारे पास जो हैं ADO.NET के नेम स्पेस है, उनमें से किसी में भी हम यूज कर सकते हैं इसको। So we will write here dbReader.read. So first line will be read, it will be read by this command, and then f name equals to string dot value of dbReader.getItem first name. तो वहाँ पे फर्स्ट नेम
पहला फील्ड होगा तो गेट आइटम फंक्शन क्या करेगा, पहले फील्ड की वैल्यू को उठाएगा डीबी रीडर से और उसको कन्वर्ट कर देगा वैल्यू ऑफ में, स्ट्रिंग डॉट वैल्यू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा और एफ एन के अंदर स्टोर कर देगा। ऐसे ही एल एन के अंदर लास्ट नेम को स्टोर करेगा एंड दीज टू वैल्यू विल बी ट्रांसफर टू द कंस्ट्रक्टर ऑफ द क्लास, जो हमने कस्टमर क्लास दी हुई है सी इक्वल टू न्यू कस्टमर एफ एन कॉमा एल एन। तो कंस्ट्रक्टर को जाएंगे और उसके जो प्राइवेट वेरिएबल है उस पर ट्रांसफर हो जाएंगे और फिर जब हम इनको प्रिंट करेंगे तो ऐड सी करते ही वो जो सी के अंदर जो प्राइवेट वेरिएबल है उनकी वैल्यू हमारी ऐड हो जाएगी किसके अंदर, लिस्ट बॉक्स के अंदर। सो नाउ वी आर एडिंग दिस डॉट लिस्ट बॉक्स, दिस डॉट लिस्ट बॉक्स सेम क्लास के अंदर हम लिस्ट क्लास बनाएंगे और गेट आइटम डॉट एड डॉट सी, गेट आइटम फंक्शन एग्जीक्यूट होगा और वो ऐड करेगा सी क्लास से, सी इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कस्टमर क्लास, उस क्लास के वेरिएबल को ऐड कर देगा लिस्ट आइटम के अंदर। तो दिस इज द प्रोविजन ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम। तो ये कमांड है जिसके थ्रू हम कमांड पहले कनेक्शन क्रिएट करते हैं फिर उसके बाद कमांड पे आते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे ये दिस इज डाटा रीडर, इट विल डिस्प्ले द रिकॉर्ड वन बाय वन, एक रिकॉर्ड एक बार में डेटाबेस से उठाया, एक रिकॉर्ड डाटा रीडर एक रिकॉर्ड एक बार में डिस्प्ले कर देगा एंड द फील्ड नेम ऑफ द डेटा वैल्यू द करंट रिकॉर्ड। तो ये मेथड इसकी है कि हम इस तरह से हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करते हैं। सो जब तक हम इस प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तब तक ये क्लियर इतना समझ में नहीं आ पाएगा। सो यू मस्ट हैव टू राइट द प्रोग्राम एंड यू हैव टू एग्जीक्यूट this program, and I have already explained you so many program. So you have to make one-to-one interfacing between your whatever your database, either it is Oracle or SQL. So first you prepare this simple program. You start the program by this program where you have been this create table command and insert command, and then go to the Oracle or SQL जहाँ भी आप इसको स्टोर कर रहे हैं and verify that whatever you are inserting that is there or not. Then you run another program of the select query. So you can extract data in grid as well as in list box or in other form, and you can Google this type of program. So after doing one or two program, it will be this ADO.NET will be very easy for you, and without database connectivity any language never completes. So this is very important part. Otherwise if you are not learning and you are not practicing this database connectivity, then you will be missing a, a very important part or very important portion of this programming language. So I will suggest you uh, practice on this database connectivity. So finally, thank you very much for listening this video. Thank you.